Okay, so let's repeat that. Okay, so rate equation is given as minus dPA by dt 3.66 PA square. So you can substitute for PA, partial pressure in terms of concentration, which is Ca into RT, and we get this equation minus d of CART by dt is equal to 3.66 CART whole square. You can take out RT from the differential because it's a constant. Minus RT dCA by dt is equal to 3.66 CA square RT whole square. So RT cancels out on both the sides, and what you get is minus dCA by dt equal to 3.66 RT into CA square. And the form of the equation which we have is essentially K into CA square. So we have this term which is essentially CA or K. Okay, any doubts, questions? So we have to find the value of K, that means we have to find the value of 3.66 into RT. So your K value is now equal to and R is what? 0.08206 and the units are, what are the units of this? And temperature is in Kelvin. What is the temperature given? Right. Okay, one more thing we have to do here. Essentially, we have to put the units of this 3.66 also. What are the units of 3.66? 3.6 units क्या है? ये derived dt है, part A. This is the units of 3.6 is 1 upon atmosphere hour. So you can put those units here and you get the units of K. So in the units, atmosphere cancels out, Kelvin cancels out, right? And
Sorry, there was an internet issue. Hello, can you hear me now? Yes, sir. So what we get is K in terms of liters per mole an hour, right? And the unit value is 3.66 into right. What we can do is we can convert this into cubic meters. कैसे करेंगे cubic meters convert liters को? One liter is how many cubic meters? 1 cubic meter is how many liters? Thousand. And 1 hour is how many seconds? If you calculate this, what you should get is ठीक है. So the rate equation we'll get is essentially the units will be, what are the units of the rate? DCA by dt का units क्या रहेगा? Can you hear me? Yes, sir. DCA by dt का units क्या रहेगा? Sir, moles per meter cube per second. So you should write all these things to get full marks. ठीक है? Any questions? If there are no questions, we'll solve some other problems.
Okay, so can you see this? 2.15. Hello. आवाज आ रहा है मेरा? Yes, sir. So we have to solve this problem 2.15. On doubling the concentration of reactant, the rate of reaction triples. Find the reaction order. So this is only this part. ये नीचे का नहीं है ये. This is for the second, I think 2.16 के लिए. So let's not worry. It's only this two lines. That means when we make the concentration, if the initial concentration is say 1 mole per cubic meter, if you make it 2 moles per cubic meter, the rate of reaction becomes 3 times. We need to find what is the order of reaction. That means value of n. Can you try this? It's a very simple problem, but आते रहता है ये exam में. Find out the value of n. कैसे करेंगे ये? Any idea? Anybody has any idea कैसे करेंगे ये problem? Problem simple है एकदम. 2 minutes का problem है. What is rate equation? When you say rate equation, what do you see? What is the rate equation? Rituja, how do you write rate equation? General rate equation. Nth order rate equation. धैर्य, ये बेसिक है. यूनिट 1 खत्म होने को आया, आपको रेट इक्वेशन कैसे लिखना पता नहीं है. मुर्तजा, नितिन, रिप्लाई नहीं आ रहा है, सो रहा है लोग सब. लॉगिन करके बैठा अटेंडेंस के लिए. गौरी, कोई रिप्लाई नहीं है. दिग्विजय सिंह चौहान, you have to respond. Then only I know that you are paying attention. Otherwise, I know that you are logged in and sleeping. कमलेश लाकड़े, Yes, sir. yes sir नहीं. How do you write rate equation? What is rate equation? nth order rate equation कैसे लिखते हैं? अभिषेक कुंभाड़े, आज यूनिट 1 खत्म होगा और नेक्स्ट वीक हमारा यूनिट 1 का टेस्ट होगा. When do you want the test? When do you want the test? It will not be MCQs. It will be problems only. Mechanism आ सकता है. At least एक क्वेश्चन mechanism का रहेगा. And some numericals. सर आंसर 1.585 है क्या? 585. Good. Excellent. और किसी ने किया है? Raise your hand जिसने किया है.
और किसी ने ट्राई नहीं किया? 2 मिनट्स का क्वेश्चन आंसर है, इसमें कुछ नहीं है, वेरी वेरी सिंपल, स्टिल एग्जाम में आता है ये। व्हाट विल आई ट्रीट इक्वेशन प्रणव पवार? Sir, minus RA1 equals to KCA to the power n. Right. So this is a general rate equation. When I say nth order, that means you can write minus R is equal to KCA to the power of n. इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए सबको। अगर इतना ही पता नहीं है, आज 9 लेक्चर्स हो गए, तो then that means you are all sleeping. अभी तो मैकेनिज्म पूछा ही नहीं मैंने किसी को। Right. So let's see how to solve this. Okay, so what we can do is you can write rate equation as and what is given is that if you double the concentration, that means if initial right, so if you double it, that means it will be 2Ca, right? So what it says is when I double the initial concentration, or not just concentration, it's the concentration, right? It's not initial. That concentration equal to Ca. So if I double it to 2Ca, my rate becomes 3 times, right? So let's Ca, and then the concentration is this much, minus Ra will be equal to C minus Ra. Rate is equal to minus Ra. Suppose let me write it this way. So when they doubled, rate becomes 3 times. That means क्या हो जाएगा? 3 times minus Ra. That means when they have the concentration as Ca, the rate is equal to minus Ra. When you double the concentration, that means it becomes 2Ca. The rate becomes 3 times initial rate. That means minus Ra. So we can write here minus Ra 1 upon minus Ra 2 right? डिवाइड कर सकते हैं हम फर्स्ट से सेकंड से, then write this as 1 A1 right, and you can write this as ठीक है. So if we substitute for these, we get minus Ra upon 3 times minus Ra, right? K cancels out, and what I get is Ca1 raised to power of Ca1 upon C2, sorry. Right? And Ca1 is Ca, Ca2 is 2Ca.
So this will cancel out, and what we get is 1/3 is equal to, this will cancel out. बराबर है प्रणव? Devendra, is it okay? Yes, yes, sir. Yes, sir. The value of n, you have a programmer calculator, right? You can find the value of n, and that is equal to 1.58. अगर कैलकुलेटर नहीं है तो you can do log करके भी कर सकते हैं. You can take log of both the sides. And then n is equal to मैनुअल भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं. You get the answer 1.58. ठीक है, किसी कोई क्वेश्चन है, डाउट है इसके ऊपर? Sir, the concentration of B also should be included in the rate equation. Not necessary. We'll see the rate equation later. यहाँ पर सिर्फ हमको दिया है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डबल, ऐसा नहीं बोला कि 2 रिएक्टेंट है. We'll see that in the second unit when we derive the rate equation for second order, when it's only A can decompose to give some product as a second order rate equation. Not necessarily 2 component 2 reactant होना चाहिए. यहाँ पर और कुछ नहीं दिया है, so we have to assume it is only one reactant. 2 reactant दिया तो if it is equal concentration, it works out to the same thing. We'll see that also. ठीक है दीक्षिता? Yes, sir. ठीक है, और किसी कोई और डाउट है? ठीक है, नहीं है तो लेट्स सॉल्व अनदर प्रॉब्लम. Sir, we have to find reaction order with respect to B also, right? Respect to B also. कहाँ बोला है ऐसा? It's given in the question. हाँ दिया है. क्वेश्चन में क्या दिया? ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बोला, रिएक्टेंट्स नहीं बोला पहली बात. राइट, इट इज ओनली सेड ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट्स नहीं दिया है. सो ऑब्वियसली वी कैन अज्यूम इट इज वन रिएक्टेंट. कहीं नहीं दिया है कि 2 रिएक्टेंट है क्वेश्चन में. जैसे हमने देखा था ओजोन कैन डिकम्पोज टू गिव ऑक्सीजन, राइट? एक ही रिएक्टेंट था. N2O5 डिकम्पोज टू गिव NO2, ओनली वन रिएक्टेंट. नॉट नेसेसरी कि हरदम 2 रिएक्टेंट होना चाहिए. वन रिएक्टेंट. Yes, sir. Yes, sir. Got it. We'll see all that in second unit. Derivation of second order or first order जब करेंगे हम, we'll see all those variations. But for the time being, in this case, it's not mentioned anywhere that there are 2 reactants. तो बोला है कि reactant का concentration double किया तो rate 3 times हो जाता है. That's all. Okay. Dikshita? Yes, sir. So let's see another problem. ये 11 स्केल की प्रॉब्लम है, अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है. ये 2.9. The pyrolysis of ethane proceeds with an activation energy of about 300 kilojoules per mole. How much faster is the decomposition at 650 degrees centigrade than at 500 degrees centigrade? Right. So activation energy दिया E,
and we have to find out rate of reaction at 650 degrees compared to 500 डिग्री सेंटीग्रेड कितना फास्ट होगा. समझा क्या? 2.19. Can you see this? Can you try this? Rate of reaction in terms of activation energy and temperature लेने का. What is the rate of reaction in terms of activation energy and temperature? You can tell. How do you write rate equation in terms of activation energy and temperature? ये भी किया हमने. Sir, ln R2 upon R1 is equal to E upon R into bracket 1 upon T1 minus 1 upon T2. Yeah, right. ये किया हमने, right? So all you have to do is substitute the value of E, temperature T1, T2 and find out R1 upon R2 or R2 upon R1. Simple substitution, और कुछ नहीं है. करो. Let's see who can do it fast. ये भी आता है कभी कभी एग्जाम में. आंसर क्या है? हाँ, आंसर क्या है आंसर आपका? 1.0076 into RA2 is equal to RA minus RA1. इतना परसेंट है 1.0076. नहीं इतना नहीं आएगा. रेशियो चाहिए ना R2 अपॉन R1 अपने को. Okay. फास्टर ln नहीं लेनी चाहिए अपने को. R2 अपॉन R1 चाहिए हमारे को. Need R2 upon R1 is equal to what? So 1.016 है क्या? नहीं 1974 आएगा. हमने देखा था गिव मी जनरल रूल फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड difference in temperature the rate doubles roughly, right? It was rough. So we are talking about changing from 500 degrees centigrade to 650 degrees centigrade, almost कितना 150 degrees centigrade का rise in temperature है. It's not going to be 1 point something, it is 1974. जिसका हो गया हैंड रेस करेगा. इसका नहीं हुआ अभी तक. सिंपल है एक तो. यूनिट 1 के क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल बहुत सिंपल रहते हैं एक्सेप्ट मैकेनिज्म वाले.
क्या हो गया, इतना सिंपल है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन है। आर की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? सर वो 8.314 ही लेंगे ना? यस, 8.314 ही रहेगा। देवेंद्र, कितना आंसर आया? हेलो सर, वो 1970.7। राइट, करेक्ट। The temperature has to be in Kelvin. सेंटीग्रेड में लोगे तो रॉन्ग आंसर आएगा। When you write Arrhenius equation, the temperature is always in Kelvin. ये मिस्टेक सब लोग करते हैं। दीक्षित, आ गया आंसर आपका? Yes, so same I. So this way that you will take temperature in Kelvin, not in centigrade. Okay, so I will write, when I said L 2.9, that means Levin's-Piel 2.9 problem. That is my code word. So when we have that rate equation is normally minus RA equal to K CA to the power of N, or K naught right. So what is given is सर आपका माइक म्यूट है लगता है। so I can write RA temperature is equal to T1 is equal to 500 plus 273 is 773. T2 is equal to 650 plus 923 Kelvin, right? So I can write, if I don't remember that equation जो बताया था थोड़ी देर पहले, I can write minus RA is equal to KCA to the power of N, and that is equal to K naught e raised to minus e by RT CA to the power of N. I don't like to remember all the equations, so I write start from basics. It doesn't take too long. So I can write rate for the first temperature minus RA1 is equal to K naught e raised to the power minus R upon E by RT1 into CA to the power of N. And for the second temperature minus RA2 is equal to K naught e raised to the power minus E by RT2 CA to the power of N. So I can take these two and divide 2 by 1, and what I will get is
ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एंड आई गेट दैट फॉर्म. So I get ठीक है. So I can substitute these values. E का वैल्यू कितना दिया है? 300 किलो जूल्स पर, राइट. और R का वैल्यू क्या है? यूनिट्स क्या है इसका? 8.314 का. R का यूनिट्स क्या है? जूल पर मोल केल्विन. Right. So I have to convert this kilojoules to joules. So I have to multiply by 1000. And bracket में आएगा 1/923 minus 1/773. ठीक है. So I should get a value of 1971. ठीक है. किसी कोई क्वेश्चन है? ठीक है. क्वेश्चन नहीं है, then we'll solve another problem. टू 11 स्पेल के लिए 1100 एट रहना चाहिए. At 1100 Kelvin, N non-N thermally cracks or breaks down into smaller molecules 20 times as rapidly as at 1000 Kelvin. Find the activation energy for this decomposition. ये पूरा 2.9 का उल्टा है, right? So यहाँ पर दिया है कि it is 1020 times faster at 1100 Kelvin compared to 1000 Kelvin, and we have to find activation energy. यहाँ पर दिया था एक्टिवेशन एनर्जी, हमारे को टाइम्स निकालना था, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी निकालना. सो इट्स रिवर्स ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम. एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का रेट, कंपैरिजन ऑफ रेट्स R2/R1 दिया हुआ है. ठीक है. एग्जैक्टली सिमिलर प्रॉब्लम, ओनली इनपुट इज डिफरेंट, तो आउटपुट हैज टू बी डिफरेंट. फाइंड आउट. लेट्स यू कैन सॉल्व इट. एग्जैक्टली सिमिलर प्रॉब्लम, ओनली थिंग इज यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का इंस्टेड ऑफ कंपैरिजन ऑफ रेट्स R2/R1. इसका हो गया, हैंड रेस करेगा.
What is the answer? Niranjan? 2.73 Newton raised to 5 joule per mole. जूल पर मोल यूनिट्स बराबर है क्या आ गया यूनिट्स Per Kelvin. पर केल्विन जूल्स पर मोल केल्विन यूनिट्स बराबर रहना चाहिए तो आंसर रॉन्ग है ऑलवेज पीसी बोलो CRE1 बोलो CRE2 बोलो CET बोलो कोई भी सब्जेक्ट हो यूनिट शुड बी करेक्ट अदरवाइज योर आंसर इज हाफ करेक्ट ठीक है सो लेट्स सॉल्व इट इजी है बहुत ये भी लेट्स सी okay so what is given is R2 by R1 it is given as 20 right and you need to find activation energy T1 is equal to 1000 Kelvin and T2 is equal to 1100 Kelvin. So we can use this equation. थोड़ा गड़बड़ हो गया पतला कर देता हूँ इसको So I can use this equation NO RA2 by RA1 NOT2 NOT1 NOR I can find out the value of E. Okay, so I know this is 20 minus 5 8.38 ठीक है find out value of E that is ln of 20 7 2 write this as
274 किलो जूल। ठीक है। हेलो सर, वो यूनिट नहीं समझ में आया कि पर केल्विन क्यों लिया, क्योंकि केल्विन केल्विन तो कैंसिल हो जाएगा ना आर के यूनिट से। Okay. Dikshita, can you explain why Kelvin is required? Dikshita? सर केल्विन नहीं आएगा ना? नहीं आएगा। नहीं। आर का यूनिट्स क्या है? जूल्स पर मोल केल्विन। यू राइट, केल्विन नहीं आएगा। बराबर है, केल्विन नहीं आएगा। इट इज जूल्स पर मोल, एक्टिवेशन एनर्जी पर मोल ओनली। राइट देवेंद्र। ठीक है। यस सर। Okay, so when do you want the test now? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। लेक्चर इज ऑलमोस्ट ओवर, टाइम हो रहा है। सर नेक्स्ट ट्यूसडे को ही लेते हैं। ट्यूसडे को लेक्चर में चाहिए कि बाद में चाहिए आपको? ये आपको 1 घंटा में होता नहीं है, सबमिशन का टाइम लगता है, आधा घंटा एक्स्ट्रा देता हूँ मैं, राइट। तो और दूसरा क्या होता है, लेक्चर्स इसमें टेस्ट में गए तो वो लेक्चर्स कम हो जाते, पोर्शन कंप्लीट नहीं होता फिर। तो ऑलवेज ट्राई टू टेक इट इन एक्स्ट्रा लेक्चर्स करके टेस्ट चलेगा। चलेगा सर। वांट्स इट इन द टेस्ट, इन द क्लास, सॉरी। लेक्चर के बाद ही लेक्चर के बाद ही तो बताओ फिर। देन इट इज फाइन विथ मी एंड टाइम यू कैन टेल मी, डेट एंड टाइम। शिवानी है क्या? शिवानी नहीं है। टेल मी, एनीबडी कैन टेल मी। देवेंद्र, ट्यूसडे को कितने बजे? सर मतलब लेक्चर्स होने के बाद 2 बजे वगैरह चलेगा ना? आई एम फाइन विथ दैट। 2 बजे कर सकते हैं हम, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कभी भी। आई हैव नो इश्यूज। अगर आपको टाइम ज़्यादा चाहिए तो बताओ, नहीं ट्यूसडे इज फाइन विथ मी। कल कंफर्म करिए, ठीक है। ओके सर।